ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। Audio Jungle. ओके सो गाइस पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने इस मॉडल का जो है बैकग्राउंड हमें इरेज करना है। तो इसको इरेज करने के लिए क्या करेंगे, जिसको हम ले जाएंगे ऐसे ड्रो टूल में। ड्रो टूल में ले जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है अपनी जो मॉडल की लेयर है इसको आपको ऊपर रख लेना है। एंड इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश इरेजर में जाना है। एंड उसके बाद जो गाइस इरेजर का जो हार्डनेस होगा वो होगा 90 तक, ठीक है। एंड इसका जो ब्रश का साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, फटाफट से इरेज कर लेना है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 चले जाना स्लाइड वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है।
एंड हाईलाइट जो है गाइस आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जो उसका शेडो है इसको भी बढ़ा देना है, एंड वाइट है जो इसको भी बढ़ा देना है, एंड ब्लैक को भी बढ़ा देना है। एंड चला जाना है कलर मिक्स में, और कलर वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को माइनस कर देना है, एंड इसके बाद आपको कलर मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड इसका लुमिनस को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को चल जाना है येलो कलर में, इसका ह्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो ड्रेस का कलर है वो येलो है तो उसको चेंज कर सकते हो। फिर डार्क ब्लू में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसका सैचुरेशन को प्लस कर देना है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है, एंड इसको चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस फोटो में जो विग्नेट है वो डालना है, ठीक है। एंड इसका नीचे स्क्रॉल करना, आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, आप सबको उसको भी बढ़ा देना है, एंड इसको चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड नोट डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नोट डायरेक्शन आप सबको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।